हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फिर एक बार नए टॉपिक के साथ रीजनल रूरल बैंक। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर syllabus, but it will also help you in future for when you will be preparing for your competitive exam. So I try to cover all the aspect from the competitive examination point of view too. So let's start with this topic, regional rural bank. Friends, now we will see the history of regional rural bank. Um, in the rural area, the majority of the population were not having a basic banking facilities, and they were not having a financial services in their area. So what happened in the year in 1969, 14 private banks were nationalized by the government of India, and even after nationalization of 14 private banks, they were not able to cater the need of rural credit. To this effect, an ordinance were passed in the year 1975 on the recommendation of Narsimham Committee. And on their recommendation, the government of India has established the regional rural bank in 1975, and it was established under the provision of the ordinance which was passed on 26th September 1975, and this was followed by Regional Rural Bank Act 1976. Uh, नाउ फ्रेंड्स, जब हम हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं और हम आरआरबी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट है हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें इसको उस तरीके से भी, जितने भी डेट्स हैं, जिसने भी इसको रिकमेंडेशन किया है और इसे कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये छोटी छोटी बारीकियों पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो अब हम फ्रेंड सोर्सेस ऑफ फंड देखते हैं। अगर हम कि आरआरबी अपने सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से गैदर करते हैं, कहाँ से रेज करते हैं वो अपने फंड को, तो उनके पास जो टोटल सोर्स होता है उसमें ओन फंड भी हो सकता है, डिपॉजिट हो सकते हैं, बोरोइंग फ्रॉम नाबार्ड हो सकता है, दे हैव अ स्पॉन्सर बैंक्स एंड अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। जब रीजनल रूरल बैंक को एस्टेब्लिश किया था विद द ऑर्डिनेंस विच वाज पास्ड ऑन 26 सितंबर 1975, उसको फर्स्ट फेज कहा जाता है, और इन दैट पर्टिकुलर फर्स्ट फेज 5 रीजनल रूरल बैंक वर एस्टेब्लिश। एंड द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक जो एस्टेब्लिश किया गया था उसका हेड ऑफिस था मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में, और उसका नाम रखा गया था प्रथमा ग्रामीण बैंक। और जब उसे एस्टेब्लिश किया गया था तो उसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो 5 करोड़ थी, एंड इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 2 अक्टूबर 1975, एंड इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। 2 अक्टूबर एक ऐसी डेट है जो हम कभी नहीं भूल सकते हैं, और मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम 2 अक्टूबर को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेट्स मूव अहेड। So friends, as I told you, in the first phase there were total 5 regional rural bank were established by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ऑर्डिनेंस विच वॉज पास ऑन 26 सितंबर 1975। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार इस डेट को क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट ये आपके मेमोरी में एकदम अच्छी तरीके से फिट हो जाए, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैंक वॉज प्रथमा ग्रामीण बैंक, और बाकी जो 4 बैंक थे, 4 अदर बैंक्स जो सेटअप किए गए थे, वो ये हैं।
उसके बाद जो बैंक एस्टेब्लिश किया गया था वो था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में। फिर उसके बाद एक बैंक एस्टेब्लिश किया गया वेस्ट बंगाल में मालडा में। अ, दोस्तों एक बात बताना चाहूँगी कि ये एशिया का सबसे पहला बैंक था, रूरल रीजनल बैंक, जो कि वेस्ट बंगाल में सेट किया गया था मालडा में। फिर उसके बाद भिवानी में हरियाणा में सेटअप किया गया रीजनल रूरल बैंक, और फिर उसके बाद जयपुर राजस्थान में सेटअप किया गया रीजनल रूरल बैंक। तो प्रथमा ग्रामीण बैंक जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सेट हुआ था, उसके बाद ये 4 अलग बैंक अलग अलग स्टेट्स में एस्टेब्लिश किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अपने रीजनल रूरल बैंक की आगे की जानकारी लेते हैं। So if we look at the regional rural bank, so what is a regional rural bank? So regional rural bank is nothing but the Indian scheduled commercial bank, that is government bank. It is operating at the regional rural area, regional level in different state of India, and they have been created with the view of serving primarily in the rural area of India. Matlab they are going to provide the basic financial and banking services only in the rural area, which were deprived from all the basic banking and financial services. Now friends, it is very important from your competitive examination point of view. You have to remember this is a very important point. So the regional rural bank is jointly owned by central government, state government and sponsor bank. Now when we talk about the authorized capital of regional rural bank is 5 crores, and all these three entities share that 5 crores in the ratio of 50 is to 15 is to 35%. Now if we see the power of managerial and operational supervision, who is taking care of this managerial and supervision of operational activity? It is taken care by the sponsor bank. And when we talk about the regulatory and the performance monitoring, that is done by Reserve Bank of India RBI and NABARD. And other activities like the actions are generally governed by the Regional Rural Bank Act. Uh, so let's move ahead with more information. Now we'll see the functions of regional rural bank. इसे कई बार objective के form में भी they asked in the competitive examination. So what are the functions? What are the objective? See, the objective or the functions are very simple to remember also. Number one is providing banking facilities to rural and semi-urban areas. Second one is carrying out government scheme like MGNREGA, पेंशन स्कीम एक्सेट्रा। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट. This is very important. Many times they ask in the competitive exam, they ask about the full form, or they ask what is this Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. So you remember this as it is an Indian labor law. ये एक इंडियन लेबर लॉ है और एक सोशल सिक्योरिटी है जो कि मेजर करता है और जिसका एम होता है गारंटी द राइट टू वर्क. ओके, उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं तो थर्ड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग लोन्स टू स्मॉल बिजनेस, फार्मर्स, आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चरल लेबर टू एक्ट एज ए कैपिटल फॉर वेंचर. मतलब अगर कोई लेबर है, फार्मर है, इफ दे डोंट हैव अ मनी, हाउ दे आर गोइंग टू डू ऑल द खेती एंड ऑल. सो दे नीड कैपिटल. कोई आर्टिशन है रूरल एरिया में और वो बहुत अच्छा काम करता है, एंड इफ डजंट हैव द कैपिटल, हाउ ही इज गोइंग टू ग्रो हिज बिजनेस. तो उसके लिए अगर उसको कैपिटल चाहिए तो वो
लोन के फॉर्म में रीजनल रूरल बैंक उनको प्रोवाइड करता है. And the fourth one is a reduce cost of credit by charging lower rate of interest. So what they do when the loan is provided to small businesses, business person or a farmer or artisan or agricultural labor, okay, what they do they give a loan to all this needy people at a very low rate of interest. That means they are reducing the cost of credit. Credit is what they are giving a loan, and what is the cost? Cost is the interest. So what are they doing? They are charging a very low rate of interest from all these small farmers and the artisans and the agriculture. They are basically through this facility, financial facility, they are generating the employment also in the rural area. So this is all about the regional rural bank which we have studied, friend. I hope so this video is going to definitely going to help you out in your competitive exam and in your कॉलेज एग्ज़ाम. सो अगर आपको फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से भी हेल्प करे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.